हेलो सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्या हाल चाल, कैसी चल रही है तैयारी? दिस फेज इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन एंड स्पेशली ये जो लास्ट 15-20 डेज होते हैं ना, ये और भी ज़्यादा क्रूशियल होते हैं क्योंकि इसमें सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि वॉट एवर यू विल बी स्टडिंग यू विल बी रिमेंबरिंग इट, क्योंकि आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल बहुत हाई रहता है। तो देयरफॉर इट्स ऑलवेज इम्पॉर्टेंट कि इस पीरियड में आप जितने भी इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, आपकी जो भी स्ट्रेंथ है उसको डेफिनेटली कवर कर लो, कि आपका स्ट्रेंथ कभी भी जो है ना एग्जाम में नहीं आपसे मिस होना चाहिए। ओके, सो आई होप कि आप सभी ने यानी कि अनुभव टेस्ट दिया होगा। ओके, एंड आई होप यू ऑल वुड हैव स्कोर्ड वेल ऑल्सो। जीएस का डिस्कशन आपका हो चुका है ऑलरेडी, जीएस डिस्कशन मस्ट बी विथ यू। एंड देन दिस इज दी सीसैट डिस्कशन। सीसैट में भी आदित्य सर ने पैसेजेस के डिस्कशन लिए। नाउ आई विल बी टेकिंग डिस्कशन ऑफ दी मैथ्स एंड रीजनिंग क्वेश्चंस। ओके, सो आपको क्वांटिटेटिव, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग क्वेश्चंस के डिस्कशन लूंगा। नाउ हियर इफ यू गो बाय द क्वेश्चन पेपर, सो आई डोंट थिंक कि it was too kind of difficult to score your above 66 marks in this test, because this test was not that tough. आपका ये टेस्ट इतना टफ नहीं था। Okay, so yes, few questions were really good, few questions were easy. As I have told you all earlier, again I am tell you all कि आपको हमेशा क्या करना है, you have to start with your strength and you have to always devote some time in picking up the questions. देखो एग्जाम में सारा गेम है सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस का। ओके, सो राइट फ्रॉम आपको जो बुकलेट मिली थी तो उसमें जो क्वेश्चन नंबर है, सो दिस विल बी द सेम क्वेश्चन नंबर हियर। ओके, सो स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन नंबर 5th, कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज। हियर इज कोडेड एज 8251118 and write is coded as 1881165. How will race be coded in that language? Although इस केस में क्या है कि this word it contains 4 letters, but the code here it contains how many digits? 6 digits. Generally coding decoding में words हैं and if the code is in the form of number, then definitely आपको chances हैं कि आपको position से related होता है, कि whatever is the position of the लेटर इन अल्फाबेटिकल सीरीज में जो भी पोजीशन होती है अल्फाबेट की, कोड उससे रिलेटेड रहता है। नाउ हियर इन दिस केस, अब देखो दिस इज लिटिल ट्रिकी हियर एंड अगेन द मोमेंट यू स्टार्ट विथ अ ट्रिकी क्वेश्चन ना, आपके लिए बड़ा चैलेंज हो जाता है। नाउ हियर इन दिस केस एक्चुअली नंबर ऑफ लेटर्स 4, कोड कंटेन्स 6 डिजिट्स। अब देखो आप इस केस में if I talk about the position, तो position of H is 8th, E 5th, A 1st, R is 18th। अब देखो अब जैसे ही I have asked you all always कि हमेशा फोकस किया करो, H 8th पोजीशन, R 18th पोजीशन, 8 and 18 आपको दिख रहा है, यहाँ पे 8 है, 18 यहाँ पे दिख रहा है, इसलिए हमेशा एक्सप्रेस करना इंपॉर्टेंट होता है। 8 and 18 दिख रहा है, अब बीच में यहाँ पे इन मिडिल यू फाइंड 25 है, 1 है, 25 इज हियर, 1 इज हियर। अब द मोमेंट यू सी 25 1 एंड हियर यू फाइंड 5 and 1, सो नाउ 5 स्क्वायर इज 25, 1 स्क्वायर इज 1, so it means it's kind of 5 square 25 and then 1 square 1. Now if this is the pattern, अब जस्ट क्रॉस चेक कर लो, राइट में R 18 फर्स्ट के लिए पोजीशन, E आपका 5th है, 5th है। अब देखो I इज 9th लेटर, तो यहाँ पे 9 स्क्वायर आपका 81, D इज 4th, सो 4 स्क्वायर 16। सो नाउ अब रेस के लिए R डेफिनेटली आपका ये 18 हो गया, E आपका डेफिनेटली आपका 5 हो गया, A इज 1 एंड C इज 9, सो इट बिकम्स 18195। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। नाउ हाउ मेनी नंबर्स आर देयर of the decimal form A.BC?
वेयर ए बी सी आर डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट्स। अब देखो वी नो कि डिजिट्स आपके क्या होते हैं 0 to 9, दे आर टोटल 10 डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नॉन जीरो डिजिट्स हैं यानी जीरो आपका है नहीं, सो 1 to 9 देयर आर 9 डिजिट्स। अब 9 डिजिट्स हैं एंड हियर आपको क्या होना चाहिए डिस्टिंक्ट। तो डिस्टिंक्ट मीन्स कि आपको रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। सो अब ऑल ऑफ यू व्हेनेवर रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, सो इन दिस केस you know the simplest way is first position if it can be filled in 9 ways, you can have any of the 9 digits here, then second place you can fill it in 8 ways and third place in 7 ways, so total 9 into 8 into 7. Now based on the following information, next question, consider the questions and the two statements given below. 5 persons P, Q, R, S and T are sitting in a straight line facing north and equidistant from each other. देखो पहले भी I have told you all कि कभी भी straight line facing north, देखो it does not matter whether they are facing north or south or east or west, कभी भी आप एक लाइन में बैठ रहे हो ना, तो आप किसी भी डायरेक्शन में फेस करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको रिजल्ट विल बी सेम। क्वेश्चन है who is sitting fourth to the right of P, तो ये डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन है। सो बेसिकली डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन में व्हाट वी डू, वी चेक वेदर द गिवन डेटा इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन और नॉट। इस केस में स्टेटमेंट फर्स्ट है। सो नाउ हियर इन दिस केस देयर आर टोटल 5 पोजीशंस। ओके, अब आपको पास कितनी पोजीशंस हैं, टोटल 5 पोजीशंस 1 2 3 4 5। सो हियर आप हमेशा डेटा सफिशिएंसी में एज यू गो थ्रू दी ऑप्शंस, पहले आप क्या करते हो, इंडिविजुअली आप स्टेटमेंट्स को चेक करते हो एंड देन आप क्लब करके आप चेक करते हो। तो नाउ हियर इन दिस केस 5 पोजीशंस आर देयर। फर्स्ट स्टेटमेंट Q एंड T डू नॉट सिट ऑन द कॉर्नर्स एंड S सिट्स इन द मिडिल। अब S यहाँ पे है, Q एंड T डू नॉट सिट द कॉर्नर, यानी कि Q एंड T यहाँ पे भी हो सकता है, Q एंड T यहाँ पे भी। ओके, क्वेश्चन था हु इज सिटिंग फोर्थ टू द राइट ऑफ P। अब यहाँ पे P कैन बी हियर, P कैन बी हियर। सो नाउ डेफिनेटली आपको इन दिस केस P के हमेशा राइट एंड लेफ्ट, यू हैव टू ऑलवेज टेक योर राइट एंड योर लेफ्ट, यानी कि अब आप स्क्रीन पे देख लो दिस विल बी लेफ्ट, ये लेफ्ट होगा, ये आपका क्या होगा राइट होगा। सो इस केस में यू डोंट नो द पोजीशन ऑफ P, डेफिनेटली यू कैन नॉट फाइंड आउट। फर्स्ट स्टेटमेंट अलोन नॉट सफिशिएंट। सेकेंड स्टेटमेंट S sits somewhere in between Q and R. S sits somewhere between Q and R. So अब इस केस में S is sitting between Q and R. So now again here in this case, अब आपको just अगर if you take second statement तो आपको 5 positions हैं, S is between Q and R. तो S is between Q and R. There are so many ways in which they can sit. तो definitely आपको P की unique position है नहीं, you cannot find out unique position of P, and then certainly you cannot find out कि आपको P के फोर्थ राइट कहाँ है। So second statement alone also not sufficient. अब आप क्या करते हो, क्लब करते हो। क्लब आप हमेशा करते हो, तो देखो आप क्लब में जैसे आपका ये है। So now here in this case, अब suppose I am taking 2 situations, okay. So now here suppose Q here, T here, okay. In this one S, T, Q. S sits somewhere between Q and R. So R can be here. S sits somewhere between Q and R. Now here in this case, the moment you find out कि S sits somewhere between Q and R. So अब आप कैसे, how can you make R sit? So now here in this case, R will be here, so S is sitting between Q and R, okay. And if R is here, then S is sitting between Q and R. So both ways S sits somewhere in between. देखो in between का कभी ये मतलब नहीं होता कि exact in the middle of the two, okay. So here in this case S sits between Q and R, ऐसे भी हो सकता है, S sits between Q and R, here also possible. Now what we find कि P की, do we know the distinct position of P? No. अब आपको the moment you cannot find out the distinct position of P,
definitely you cannot answer who will be sitting fourth to the right of P. तो हमेशा याद रखना बी क्वेश्चन स्पेसिफिक. यहाँ क्वेश्चन क्या, फोर्थ टू द राइट ऑफ P. If you cannot find out exact position of P, definitely you cannot find out fourth to the right of P. Now in this series, which letter appears at the 45th place? So now here, whenever you get such question ना, so हमेशा एक काम करना, पहले express करो, you know, new handwriting also. अब आप हमेशा you write it and express it. क्योंकि क्या होता है कि कई बार जब आप रीड करते हो ना, थिंग्स डू नॉट क्लिक, बट व्हेन यू विल राइट द सेम थिंग वो क्लिक करेगा. बी डी सी ई डी एफ ई जी एफ, like this it's going on. Now here in this case, now what we observe that B C D E F, this is one series, and D E F G H, this is the another series. So two series running parallel. Okay, the moment you know two series running parallel, तो अब आपको ये क्या हो गया, this is first position, ये second, third, fifth, seventh, ninth position, like this. देखो हमेशा याद रखना, why I am just focusing on first, third, fifth, seventh, क्योंकि you have to find out what will be at the 45th place. You have to find out what will be at the 45th place. अब देखो 45th place will be definitely part of this series. 45th place will be definitely part of this series. वो इसी series का part होगा. Now if it will be part of this series, अब यहाँ पे now all of you please be attentive. अब देखो the easiest way is कि you make a group of 50. Okay, 50. Why I am taking 50? क्योंकि there are total 26 alphabets. 26 alphabets start from A, but यहाँ पे ये start हो रहा B से. So B से start हो रहा है, तो अब आपको कितने alphabets हो जाएंगे टोटल 25. तो 25 into 2 50. तो अब therefore I am taking कि अब आप ये 50 टोटल 50 टर्म्स ले. सो आपका ये 50 टर्म्स है. अब आपके ये 50 टर्म्स में जो ऑड पोजीशन की टर्म्स है, दे आर स्टार्टिंग विथ B. सो B है, C है, D है, E है, लाइक दिस. सो B इज द फर्स्ट, C इज द सेकेंड, D थर्ड, E फोर्थ, F फिफ्थ. सो इन दिस मैनर आपका जो 25th टर्म होगा, 25th टर्म होगा, दैट विल बी एक्चुअली in this manner, वो आपको क्या हो जाएगा, 25th term here will be Z, and this Z will be actually your 49th term. इस सीरीज का 49th टर्म होगा. एंड इंडिविजुअली जब हम देख रहे थे, ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है. सो इन दिस मैनर ये आपका क्या होगा, ये 25th होगा. तो ये 49th, तो ये 49th, तो आपका 47th क्या हो गया, Y, एंड देन आपका 45th क्या हो जाएगा, 45th विल बी X. देखो सबसे इजी तरीका यही है, दिस इज द इजीएस्ट वे. कि अब आप क्या कर लो, सिंपल आप देख रहे हो B C D E लाइक दिस इट्स गोइंग ऑन. 50 का ग्रुप बना लो इमीडिएटली, क्योंकि 45th प्लेस, देखो एग्जाम में हमेशा व्हेनेवर द क्वेश्चन इज आस्क्ड ना, कि इट इज आस्क्ड इन सच अ मैनर कि जहाँ पे आप कोई ट्रिक अप्लाई कर सको, वेयर यू डोंट हैव टू डू टू मच कैलकुलेशन. यहाँ पे है 26 अल्फाबेट्स होते हैं, तो आपको B से स्टार्ट हो रहा है, तो B to Z 25 अल्फाबेट्स, तो 25 into 2 50 का आपने बना लिया. एंड जस्ट 50 में जो आपको ऑड पोजीशन होंगी सारी आपको B C D ये सब ऑक्यूपाई करेंगी. तो आपको फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवंथ लाइक दिस टिल 49. तो आपका 45th टर्म आपका क्या हो गया, X. Ninth question, 7 persons are there, MNO, PQ, R and S appear for a medical test. O, N and Q live in Delhi while others live outside Delhi. Okay. Only P and R were diagnosed with diabetes. Only M, O and P have vitamin D deficiency while rest have vitamin D. Who among them live outside Delhi and have vitamin D deficiency with no diabetes? Now all of you, this is very easy question. Okay. Why easy question? अब देखो इसमें ना
हमेशा भी क्वेश्चन स्पेसिफिक, आउटसाइड दिल्ली, सो आउटसाइड दिल्ली विटामिन डी डेफिशिएंसी, विटामिन डी डेफिशिएंसी। देखो क्वेश्चन हमेशा कंप्लीट, ऑलवेज रीड द क्वेश्चन कंप्लीटली फिर अटेम्प्ट करो। एंड नो डायबिटीज, सो वी हैव टू फाइंड आउट सच पर्सन, ओके। सो आउटसाइड दिल्ली, अब देखो हियर O, N and Q live in Delhi, O, N, Q live in Delhi, so outside Delhi क्या हो गया, M, P, R, O, N and Q, M, N, O, P and S, so M, P, R and S they live outside Delhi। अब आपको कॉमन फाइंड आउट करना है। P and R were diagnosed with diabetes, so P and R diabetes, so no diabetes, M, N, O, Q, S, no diabetes। M, O and P have vitamin A deficiency, so you have to find out vitamin D deficiency, while others have vitamin D deficiency, so while others have vitamin D deficiency, so except M, O and P, that is N, Q, R and S, so now all of you here in this case outside Delhi vitamin D deficiency and no diabetes, just see which one is common everywhere। तब आपका क्या है, S is common, S is common, therefore आंसर आपको क्या हो गया, ऑप्शन सी S। सो ऑलवेज बी क्वेश्चन स्पेसिफिक, हमेशा क्वेश्चन में वॉट एवर इज आस्क्ड, देखो बिकॉज यू हैव टू फाइंड आउट द कॉमन टर्म, तो बस वही एक्सप्रेस करो, नॉट नेसेसरी कि आपको कंप्लीट चार्ट बनाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सिंगल क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि यू हैव मोर क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेट, ओके। When 2 to the power 33 is divided by 10, the remainder will be, see this is the concept of cyclicity। now here in this case first concept क्या है आपका, यहाँ पे divisibility rule का भी small concept apply होगा कि whenever you divide any number by 10, what remainder you get, क्या remainder आता है, whatever will be the unit digit of the number that you get as the remainder। आप for example जैसे 567 है, आप 10 से डिवाइड करोगे, एंड में रिमाइंडर क्या आएगा, 7, 3, 2, 9, 5, 4, 6, दिस नंबर इफ यू डिवाइड बाई 10, इन द एंड व्हाट रिमाइंडर यू विल गेट, 6, वॉट एवर इज द यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर, सेम यू गेट एज द रिमाइंडर व्हेन यू डिवाइड बाई 10। इट मीन्स 2 to the power 33 में अब आपका टारगेट क्या है, यू हैव टू फाइंड आउट द यूनिट डिजिट ऑफ 2 to the power 33। तो 2 to the power 33 यूनिट डिजिट क्या होगा, 2 के केस में साइक्लिसिटी क्या होती है, 4 की। व्हाट आर द यूनिट डिजिट्स, 2486, 2486। आप पावर को क्या करते हो, पावर को हमेशा 4 से डिवाइड करते हो, एंड यू लुक फॉर द रिमाइंडर, हियर यू गेट रिमाइंडर 1, व्हेनेवर द रिमाइंडर इज 1 द करस्पॉन्डिंग यूनिट डिजिट इज 2, करस्पॉन्डिंग यूनिट डिजिट आपका क्या है, 2, so therefore आपका आंसर क्या हो गया, 2। This number is divisible by 11. What is the value of digit G? देखो टेस्ट ऑफ divisibility rule for 11 आपको हमेशा important है। So now divisibility rule for 11, you know sum of the digits at odd places, sum of the digits at even places. You sum them up separately and then you find their difference. If the difference is 0 or multiple of 11, the number will be divisible by 11 or else it will be not. So here is in this case अब odd places में I am starting the counting from right hand side, okay, yes, odd places I am saying first place, third place, fifth place, seventh place, ninth place, 11th place, okay। so आपका हो गया 9 plus 7 plus 5 plus 6 plus 7 plus 4, so 16, 5, 21, 6, 27, 7, 34, 4, 38 आ गया, एंड आपका इवन प्लेसेस पे 8 प्लस जी प्लस 4 प्लस 8 प्लस 5, सो 8 प्लस जी प्लस 4
प्लस 8 प्लस 5, सो 12 20 25, तो आपको 25 प्लस जी. अब देखो now the difference between these two, it cannot be 0 ना, because why it cannot be 0, because in that case अब आपको g की वैल्यू 13 हो जाएगी, which cannot be, क्योंकि g is what, a single digit number. okay, digit है, g क्या है, digit है. हमेशा एक चीज याद रखना आप लोग, because UPSC every year they use this term, एंड स्टूडेंट अभी भी कई बार कंफ्यूज रहते हैं. डिजिट्स सिर्फ 0 to 9 होते हैं, नंबर इंफिनिटी तक होते हैं. okay, so 25 plus g, so now here in this case, यानी कि अब नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि इनका डिफरेंस क्या हो, 11. so अब डिफरेंस 11 होने के लिए, now if the difference has to be 11, then definitely g will be what, 2, then only 25 plus 2 27, and 38 and 27 difference will be what, 11, and the number will be divisible by 11. Is it clear? A pie diagram shows the percentage distribution of total salary of an employee in its various components. He receives 60% salary as basic pay, 15% of the total salary as HRA, 18% of the total salary as DA, and rest as other allowances. Okay, just hold on, the image is not here. Okay, so all of you, let me just. So now here in this case, see, HRA and DA correspond. So total salary, suppose if I take it as S, total salary as S. So total salary, if I take it as S, then he receives 60% salary as basic pay. So total salary is S, basic pay is 0.6 S, HRA 0.15 S, 15%, and then 18% as DA 0.18 S. okay, rest as other allowances. So rest as other allowances आप कितने हो जाएंगे? So now just you subtract, so you will get 0.07 S. If HRA and DA correspond to total X percent of the basic pay, तो ये कितना हो गया total 0.33 S. What is the value of X in terms of percent? So X क्या हो जाएगा, 0.33 S upon basic pay 0.6 S into 100%. So 11 into 5, 55%. Okay. So here only I will explain the next question also. Okay. Again, if Y represents the basic pay and other allowances in total. Okay. So basic pay and other allowances. Now I am taking next question number 13. Okay. So basic pay and other allowances 0.6 plus 0.07, 0.67 S. Okay. Then what is the total angle formed by Y at the center of the pie diagram? Whenever in case of pie chart it is expressed in terms of percent, तो percent के terms में express होता है, तो complete क्या है 100%, and whenever it is expressed in terms of degree तो complete क्या है 360 degree. So हमेशा याद रखना, now all of you please remember कि percent में complete क्या होता है आपको 100%, डिग्री के केस में complete आपको क्या हो गया 360 degree. So अब now 0.67 S. So in terms of degree इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0.67 S upon complete is S, because complete क्या होगा S है ना, total salary 360 into 360 degree. So do the calculation, see what answer you are getting. 241 point something जो है आपका आंसर आ जाएगा
241.2 degree. Now next question number 18th. Question number 18th है, there are 3 points P, Q and R on a straight line such that PQ is to QR is 3:7. Q is in between P and R. There are points A and B on this straight line such that A, the middle point of PQ, and B lies between Q and R such that BR equals to 3/4 QR. Find the ratio of PA is to QB. So now here in this case, देखो again first read the complete question को exact position clear हो जाता है. बस कभी भी इन केस में स्ट्रेट लाइन में पॉइंट्स है ना, सो ऑन विच साइड विच पॉइंट इज देयर, ये आपको क्लियर होगा आफ्टर रीडिंग द एंटायर क्वेश्चन ओनली. सो इंस्टेड ऑफ जस्ट स्टार्टिंग एंड गेसिंग, रीड द एंटायर क्वेश्चन, पिक्चर क्लियर करो. सो सपोज दिस इज द स्ट्रेट लाइन, ओके, क्यू इज इन बिटवीन पी एंड आर. तो आपका ये पी है, आर है, पी क्यू इज टू क्यू आर इज 3:7. तो आपको so PQ is to QR is 3:7. Okay, there are points A and B on a straight line such that A is the middle point of PQ. तो A middle point of PQ, तो A यहाँ पे आ गया, and B lies between Q and R such that BR equals to 3/4 QR. BR is equal to 3/4 of QR. Find the ratio of PA is to QB. Other here in this case ना there are 2-3 ways of solving it. एक आपका क्या है कि ये यहाँ से 3 यूनिट्स ले लिया इसको, PQ को, QR क्या हो गया, 7 यूनिट्स हो गया, दिस इज 7 यूनिट्स. अब इस केस में ए मिडिल पॉइंट है तो ये क्या हो गया, 1.5 यूनिट्स, या फिर इफ यू वांट इंस्टेड ऑफ राइटिंग 1.5 यूनिट्स, you can write down 3/2 units, क्योंकि रेशियो फाइंड आउट करना है तो डेफिनेटली कैलकुलेट रेशियो इन टर्म्स ऑफ नेचुरल नंबर ओनली. सो BR इक्वल्स टू 3/4 QR. सो BR की वैल्यू क्या हो जाएगी, BR विल बी 3/4 इंटू QR की वैल्यू क्या है 7, so क्या हो जाएगा 21/4 यूनिट्स. So now you have to find out the ratio of PA is to QB. So PA is to QB you have to find out. अब ये 21/4 यूनिट है तो ये रिमेनिंग कितना हो जाएगा. नाउ ऑल ऑफ यू 7 यूनिट्स में से 21/4 यूनिट्स सब्ट्रैक्ट करो. सो 4 into 7 28 minus 21 that is 7/4 units. So PA 3/2 units upon 7/4 units. Now units gone. So now here 2 will go in the numerator, so 3 into 2 6 upon 7, 6 is to 7. देखो सिंपल कैलकुलेशन एक्सप्लेन करने में टाइम लग रहा है, अदरवाइज दिस कैलकुलेशन इज वेरी सिंपल. ओके, हर एक चीज आई हैव टू मार्क हियर, देयरफॉर इट इज टेकिंग टाइम, अदरवाइज दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी वन. ये आपका इजी क्वेश्चन है. ओके Question number 19th, consider the following statements. Total compound interest will be approximately same as the principal amount if it is calculated for 2 years at 41.4% per annum rate. Amount equals to P into 1 plus R upon 100. So R यहाँ पे क्या हो गया 41.4% upon 100 to the power 2. So here in this case amount, देखो
in case of compound interest we know कि we don't have direct formula for finding out compound interest. Amount find out करते हैं, उसमें subtract कर दो principal. So P 1 plus, तो 100 plus 41.4, so 141.4 upon 100 whole square. So ये 0 0 cancel किया, सी आ गया P इंटू 1.414 स्क्वायर. अब देखो यहाँ पे मेनी टाइम्स इफ यू रिमेंबर फ्यू थिंग्स ना डेफिनेटली आपको हेल्प करता है. एक्चुअली रूट 2 है ना, रूट 2 द वैल्यू ऑफ रूट 2 इज 1.414. आप जब ऐसे कैलकुलेट करते हो तो रूट 2 की वैल्यू क्या आती है 1.414. सो इसलिए 1.414 आप स्क्वायर करोगे तो एक तरह से क्या हो गया, रूट 2 है तो रूट 2 को स्क्वायर करोगे तो 2 आ गया. सो नाउ दिस वन इट बिकम्स 2p. सो अमाउंट अगर 2p है तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट इज 2p माइनस p. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट करेक्ट? यस, कंपाउंड इंटरेस्ट आपका अप्रोक्सीमेटली सेम है. देखो इसलिए अप्रोक्सीमेटली कह रहा है बिकॉज रूट 2 की एग्जैक्ट वैल्यू 1.414 नहीं होता ना, ये डेसिमल में आगे जाता है. सो देयरफॉर वी आर टेकिंग हियर, इसलिए देयरफॉर इट इज मेंशन्ड आल्सो अप्रोक्सीमेटली, कि कोई कंफ्यूजन ना रहे. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. सेकेंड statement, total simple interest will be same as the principal amount if it is calculated for 50 months at 24% per annum rate. So SI P into R is 24, time is 50 month. तो 50 मंथ को ईयर में जस्ट 12 से डिवाइड कर देंगे अपॉन 100. Yes, SI equals to P. So this second statement is also correct. Simple interest will be same as the principal. So both first and second statement is correct. देखो root 2 value is all of you. Just remember always forever and ever that root 2 value is your 1.414 and then root 3 value is 1.732. root 3 value is 1.732. root 5 value is 2.23 around. Okay, so just remember these things, definitely it will help you. Okay, question number 20. Given you scored 56 marks in the exam, we scored 10% less marks than W and W scored 25% more marks than you. Now next question is, you scored 56 marks in the exam, we scored 10% less marks than W and W scored 25% more marks than you. How much did we score? अब देखो U का स्कोर क्या है 56 है ना, W given in terms of U, W क्या है 25% more marks than you. तो 25% क्या होता है 1/4, 56 का 1/4 क्या होगा 1/4 of 56 is 14. So 56 plus 14 70. So U क्या हो गया 56 plus 14 70 and V क्या हो गया 10% less than. So 70 से 10% less, तो 70 minus 7 that is 63. How much did we score? तो 63. This is again a very simple easy question. Next, consider the question, two statements given below. Can x be a positive number only? Okay.
So x square minus 7x plus 12 is a positive number. Which one of the following is, and statement 2 is x does not lie between 3 and 4. Now here in this case, x square minus 7x plus 12 is a positive number. It means x square minus 7x plus 12 is greater than 0. So now this will be a quadratic equation, x square minus 4x minus 3x plus 12 greater than 0. You split the middle terms. So finally x minus 4 minus 3x minus 4 greater than 0. So x minus 4, x minus 3 greater than 0. Okay. So now here in this case, x minus 4, x minus 3 is what? Greater than 0. So now what will be the range? Now here in this case, all of you just remember कि आपका range क्या हो जाएगा? Minus infinity से 3. Okay. And then हमेशा यहाँ पे smaller minus infinity से 3 and 4 to plus infinity. So this will be the range. Okay. So now here जब minus infinity to 3 है, the range of x is from minus infinity to 3, then definitely आपका can x be a positive number only? Can you definitely say no? Why? Because here in this case, अब आपका ये negative भी हो सकता है, it can be positive also. So it can be negative as well as it can be positive. Statement 2, x does not lie between 3 and 4. So definitely आपको from statement first also we are getting that x does not lie between 3 and 4. So statement 2 is kind of supporting only statement first. So if statement first is insufficient, definitely statement second also. I have told you all earlier in the class कि कभी भी question can, is, it means in these type of questions you have to see कि can you answer definitely yes or definitely no. अगर आप कर सकते हो तो fine, if you cannot then the data is not sufficient. So here in this case we have seen the range of x is in negative also, positive also. So neither definite yes nor definite no. So both these statements not sufficient, together also not sufficient. This is one of the easy questions. How many 4-digit numbers are there such that they consist of only natural numbers with each digit being odd and the number is divisible by 5? देखो odd digit है तो 1 3 5 7 9 ही हो गया and 4 digit number है आपका 4 digit number then definitely now divisible by 5, the last digit must be 0 or 5. odd digit है तो only possibility क्या है? 5. It means this last place you can fill it only by 5. So only by 5 means only one way you can fill it. And then repetition of digits is not allowed. So this place you can fill it in now 4 ways, this place in 3 ways and this place in 2 ways. So total 24 ways. Consider the question and the 2 statements given below. Is T brother-in-law of Q? Question is T brother-in-law of Q. Now read the statement fast. देखो statement first, P is brother of T, definitely not sufficient alone, क्योंकि इसमें तो T and Q both are not there ना. So now here statement 2, Q is wife of P, again this is alone not sufficient because here in this case again T and Q both are not there. Now combining both, P is brother of T, P is brother of T. See, male we always represent by square boxes, females by circle. Q is wife of P, so Q is wife of P, तो आपको Q wife of P है, so Q circle, Q and P are couple. अब here in this case question है is T brother-in-law of Q. अब in this case we know
P brother है T का, okay, but can we find out the gender of T, whether T is a male or female? Okay, so since we do not know the gender of T, definitely अब आपको क्या है, ये insufficient है, definitely insufficient है. Consider the question, two statements given below. What is the age of Akshay? First statement, Akshay's father is 28 years older than Akshay. Definitely ये statement alone sufficient नहीं है. Statement 2, 7 years ago the ages of Akshay and his father were in the ratio 3:7. No, I'll be not solving this question क्योंकि ये easy question है. देखो रेशियो के केस में, परसेंट के केस में कभी भी आपको whenever you have to find out the absolute value, so उस केस में क्या होता है, now comparative value हो and if the difference is given or any absolute value is given, अब आप you can easily find out the exact value of the all. Here in this case आपको Akshay's father is 28 years older than Akshay, ये सब, लेकिन अब आपको इससे क्या हो गया, गैप पता चल गया. So and second में 7 years ago what was the ratio of the age of Akshay and his father. अब अक्षय फादर अगर अभी 28 years older है ना, तो 7 years ago also वो क्या होंगे, 28 years older ही होंगे. गैप तो सेम रहेगा ना, हमेशा याद रखना, बिकॉज बोथ द पर्सन एज विल इंक्रीज इन दी सेम मैनर, तो गैप विल ऑलवेज रिमेन सेम. सो 7 years ago, अब ये 3:7 है, so अगर ये 3x and 7x, so difference 4x, this value you know 28, so you can find out the value of x, you can find out the age of Akshay 7 years ago, then definitely you can find out the present age of Akshay. So combining both, yes, you can answer. Consider the following statements in respect of a square sheet of side 40 centimeter. It is not possible to completely cover the curved surface of a hollow right cone with the sheet if the cone's radius is 14 centimeter and the slant height is 36 centimeter. देखो कोन के केस में, now here in this case if this is a kind of cone, अब देखो ये सपोज ये मान लेना कि बेस है, तो अब इसको कवर करने की बात कर रहे हैं. ओके, सो कवर करने में हमेशा ये विच एरिया वी टॉक अबाउट, दिस एरिया. ओके, कर्व्ड सरफेस एरिया. ये कोन है, तो इस कोन में ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया ना, तो आपको एक स्क्वायर शीट है, समझो कि यही ये एक स्क्वायर शीट है, इस स्क्वायर शीट से एक कोन है, इस कोन को इसको आपको कवर करना है. तो नाउ यू हैव टू चेक, तो आपको टोटल एरिया चेक करना है. इफ द टोटल एरिया ऑफ द स्क्वायर शीट विल बी मोर देन दैट ऑफ कोन, अगर आपको कोन के कर्व्ड सरफेस एरिया से अगर ज़्यादा होगी तो यस इट विल कवर, इफ नॉट देन इट वोंट बी एबल टू कवर. सो हियर इन दिस केस स्क्वायर शीट एरिया, एरिया ऑफ द स्क्वायर शीट क्या हो जाएगा, 40 into 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर. एंड कर्व्ड सरफेस एरिया आपको क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया इज पाई आर एल, सो पाई आर एल, सो 22/7 into 14 into slant height, L क्या होता है, slant height 36 सेंटीमीटर स्क्वायर. So you check 44 into 36 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब देखो now in this case when you multiply 44 into 36 सेंटीमीटर स्क्वायर you get 1584 सेंटीमीटर स्क्वायर. So ये 1584 सेंटीमीटर स्क्वायर, so definitely ये एरिया कम है आपको. Now this area is less than the area of the square sheet, so it means area of जो square sheet है, yes it can cover, आपको क्या कर सकता है, वो cover कर सकता है. If you make us, it means first one क्या है, यानी कि wrong है, कह रहा है it is not possible, no it is possible, so first statement wrong. Second, if we make a cylinder of length 40 centimeter by folding its side, the radius of cylinder will be 8 centimeter. So now here in this case, अब ये total area, अब इस केस में आप क्या कर रहे हो, ना आप इसको ऐसे फोल्ड कर रहे हो. ओके, इसको आप ऐसे फोल्ड करके सिलेंडर बना रहे हो.
ओके, ऐसे फोल्ड करके आप, दिख रहा ना, नाउ यू आर फॉर्मिंग अ सिलेंडर। सो ऐसे आप फोल्ड करके सिलेंडर बना रहे हो। सो इस केस में अब देखो, कभी भी क्या करोगे, हमेशा स्क्वायर शीट को जब फोल्ड कर रहे हो तो अब ध्यान देना, यहाँ पे क्या किया, ये जो एक साइड है इसको ही ऐसे फोल्ड करके बनाओगे ना सिलेंडर, यानी ये जो एक साइड है उसके लेंथ ये किसके पास होना चाहिए, 2 पाई आर। सो 2 पाई आर इक्वल्स टू 40। सो नाउ हियर इन दिस केस, क्योंकि ये देखना, ये याद रखना, ये एक बार फोल्ड हो रहा है, इतनी बार फोल्ड नहीं हो रहा है, समझेगा ना, ये एक ही बार है। तो ये जो इसका देखना, ये जो 40 सेंटीमीटर था, ये 40 सेंटीमीटर की जो शीट है ना, यही ये ऐसे क्या हो जाएगा, इसका सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्या होता है, ये सरकमफ्रेंस इस सर्किल का बेस है, सरकमफ्रेंस क्या होगा, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर इक्वल्स टू 40। तो अब यहाँ कैलकुलेट कर लो, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 अपॉन पाई, यहाँ पे अभी जैसे 3.14 ले रहे हैं। सो इफ यू टेक 20 अपॉन 3.14, सो 20 अपॉन 3.14 आप, यानी कि रेडियस आपको 6.3 समथिंग आएगा। सो हियर इट इज सेइंग रेडियस विल बी 8 सेंटीमीटर। नो, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। सो सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। Now this one is again very easy one. Here you have just the square of the numbers. So now you have the square of the numbers. So in this case, अब ये pattern क्या है? Now you just look at 3 square, 4 square, 11 square. 11 and 13 are opposite. Okay. 6 and 9 are opposite. Okay. So now here in this case, देखो 11 13 अपोजिट है, 16 36 अपोजिट है, तो डेफिनेटली 9 के अपोजिट क्या होगा, देखो 11 स्क्वायर था तो 13 स्क्वायर, 4 स्क्वायर तो 6 स्क्वायर, सब इस साइड में। अब ये 3 स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या होगा, 2 ग्रेटर, दैट इज 5 स्क्वायर। सो 5 स्क्वायर इज 25. So now, all of you, now we come to the next set of question. Study the following information carefully and answer the given question. A cyclist starts from his house. He moves 100 meter in north direction, then turns right 400 meter and stops at a cycle repairing shop to get his bicycle repaired. Now he turns left and moves 300 meter. Then he takes a route 135 degree. Just a minute. 135 degree. See? Clockwise. So here 135 degree clockwise. So here it is 1 and moves 1200 route 2 meter. 1200 route 2 meter on this road and thus reaches his sports academy. Okay. Now the question, what is the shortest distance between the repairing shop and the sports academy? So I'll just draw the figure. Okay. So all of you just get the idea. Here, now in this case, given a cyclist starts from his house, he moves 100 meter in north. So suppose he starts from here, 100 meter north, okay, turns right and moves 400 meter, 400 meter, okay. So this is house, this is his house, okay, and cycle repairing shop. So this is your cycle repairing shop. Okay. Now he turns left and moves 300 meter, 300 meter. Then he takes a road 135 degree clockwise. अब देखो, अब यहाँ से 135 degree clockwise, तो he is moving towards north now. So 135 degree clockwise means what? हमेशा towards this, in this direction clockwise. So 135 degree. So first तक 90 degree, अब यहाँ से turn करोगे 90 degree. So 90 degree means towards east and then 45 degree further.
तो 45 डिग्री फर्दर ये 130 ये 45 डिग्री, दिस वन विल बी 45 डिग्री एंड कितना ट्रेवल कर रहा है नाउ, ट्रेवलिंग 1200 रूट 2 मीटर, 1200 रूट 2 मीटर, ओके, एंड रीचेज इज स्पोर्ट्स एकेडमी, यहाँ पे स्पोर्ट्स एकेडमी है, ओके, this is given to us, okay. Although now all of you please remember this, अब यहाँ पे in direction sense test most important thing is to form a kind of right angle triangle, because hypotenuse you apply the Pythagoras theorem and then you try to find out the length and all. अब इस केस में now here again we can form a right angle triangle like this. तो याद रखना 1200 रूट 2 है तो काफी बड़ा है, इसलिए therefore I am bringing it there. Okay, 45 डिग्री. अब देखो, अब ये this is important because in this right angle triangle this is 45 डिग्री. अब किसी भी in any right angle triangle if one angle is 45 degree other will be also 45 degree. So this one will be what? Isosceles right angle triangle, यानी these two sides equal. अब हमेशा याद रखना these two sides are equal, तो अब ये लेंथ जैसे 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर है, तो ये डायरेक्ट क्या हो जाता है 5 रूट 2, रूट 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो आपको क्या होता है 5 कॉमन हो जाता है रूट 2. नाउ हियर इन दिस केस, अब यहाँ पे ध्यान देना कि दिस इज 45 डिग्री, सो दिस वन विल बी ऑल्सो 45 डिग्री. सो नाउ दिस इज योर, नाउ दिस ट्राइंगल, अब देखो सपोज आई एम मार्किंग इट ए बी सी. So this triangle ABC will be what? Isosceles right angle triangle. This is 45 degree. This one will be also 45 degree. So this is 1200 root 2. It means definitely ये entire length क्या हो जाएगा? This entire length will be 1200 meter. And this one will be also 1200 meter. So now here in this case, अब question क्या है? Now the question is distance between repairing shop. यहाँ पे repairing shop थी, यहाँ पे sports academy. So now one more triangle is being formed. So this was 300 meter, this complete is 1200 meter. So now you have to form another right angle triangle. अब देखो ये isosceles right angle triangle नहीं है, this is your right angle triangle. अब इसमें ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये एंटायर 1200 था, 300 गया 900 मीटर, ये है 1200 मीटर, तो अप्लाई करो पाइथागोरस थ्योरम, 900 1200, तो ये क्या आ जाएगा, ये लेंथ आ जाएगा 1500 मीटर, लेंथ आ जाएगा 1500 मीटर. क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं. ओके, देखो 3 4 5 का ही है ये मल्टीपल पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है ना, फेमस पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स 3 4 5 5 12 13 8 15 17, देयर मल्टीपल्स आर आल्सो पाइथागोरियन ट्रिपलेट. तो ये आपको क्या आ गया 1500 मीटर. ना हियर ओनली आई विल टेक द अनदर क्वेश्चन आल्सो, द सेकंड वन. What is the shortest distance in meter between his house and sports academy? अब देखो, अब ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाएगा. इन चैलेंजिंग इन द सेंस की हियर इन दिस केस देखो, अब 300 था, ये 100 और ये एंटायर 1200 है, तो इस नाउ दिस लेंथ, अब देखो बिकॉज यू हैव टू ऑलवेज फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज द स्ट्रेट लाइन joining the 2 points. So now here in this case, अब ये 300 ये 100, so 1200 में से 400 गया, so अब ये कितना हो गया, ये हो गया 800 मीटर. यहाँ सी B to C is 1200 मीटर एंड ये समझ लो P और Q ले लिया जैसे फॉर एग्जांपल, तो ये 400 मीटर है, तो ये यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो जाएगा, ये 1600 मीटर, इसको R ले लिया. So R to C आपको 1600 मीटर. अब देखो इसमें एक एडवांटेज है कि वन फिगर यू आर ड्रॉइंग एंड यू आर सॉल्विंग 2 क्वेश्चंस. So yes, you can spend some time in kind of drawing the figure. So ये 800 है, ये 1600 है, so this length you have to find out. So वही पाइथागोरियन ट्रिपलेट, रूट 800 स्क्वायर प्लस 1600 स्क्वायर. सो रूट 800 स्क्वायर प्लस 1600 स्क्वायर, तो अब देखो 800 के फॉर्म में ही एक्सप्रेस कर दो. 1600 को यू व्हाट यू कैन राइट डाउन, 1600 यू कैन राइट डाउन 2 into
1600, सॉरी 2 into 800, सो 2 into 800 स्क्वायर, सो 4 हो गया, एंड यहाँ से 800, सो 800 कॉमन, 4 + 1 5, सो फाइनली इट बिकम्स 800√5 मीटर. 2 into 800 होल स्क्वायर, तो उसमें से 2 का स्क्वायर भी होगा तो क्या होगा, 4 स्क्वायर हो जाएगा ना. देयरफॉर अब याद रखना ये ऐसे है सिंपल, 800 स्क्वायर प्लस 4 into 800 स्क्वायर, तो ये 800 स्क्वायर, सो व्हेन यू टेक आउटसाइड तो ये 800 हो गया, और यहाँ पे 1 + 4 5 हो गया, तो 800√5. So next questions are from syllogism. Okay, here you have to take this if they seem to be at variance from the commonly known fact, all the common, then they can logically follow from the statement disregarding the commonly known facts. Statements. First statement है no laptop is earphone. So no laptop is earphone. So अब आपका laptop and earphone will be always separate. Second, all laptop is mobile. All laptop is mobile. So all laptop is mobile. अब देखो यहाँ पे, so let me draw 2 figures only. So, mobile. In one we'll try to keep them each and everything as far as possible, and next. And second one given all earphone is tablet. All earphone is tablet. तो इसमें क्या किया, सबको as far as possible कर दिया. Okay. Second one में क्या कर दिया. Now one figure we are keeping them as far as possible. Second figure में we will bring them as close as possible. Now laptops and ईयरफोन में आपको रेस्ट्रिक्शन है. अब यहाँ पे ध्यान देना, लैपटॉप एंड ईयरफोन में रेस्ट्रिक्शन है. ऑल लैपटॉप इज मोबाइल, तो अब यहाँ पे एक मोबाइल का बना दिया बड़ा सा. ओके, ऑल लैपटॉप इज मोबाइल. एंड सेकेंड गिवन ऑल ईयरफोन इज टैबलेट, टैबलेट भी यही बना दिया कंसाइडिंग. दिस इज ऑल्सो टैबलेट. सो दिस वन इज मोबाइल ऑल्सो, दिस वन इज टैबलेट ऑल्सो. देखो ऑलवेज रिमेंबर, आई हैव टोल्ड यू ऑल, ये फर्स्ट फिगर का यहाँ पे पर्पज नहीं है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग आई हैव ड्रॉन. ओके, so now here in this case आपको ये हो गया. now second figure, because आपका target क्या है, your target is not to try to prove the conclusions correct, you have to check whether you can prove them wrong, and once wrong always wrong. So now here in this case, so now the second figure, first conclusion can be proved wrong, second one also can be proved wrong, because all mobiles are tablets, all tablets are mobile. So here neither conclusion first nor second follow. No carrot is brinjal. So carrot and brinjal separate. Again, देखो one as far as possible, another as close as possible. All brinjal are pumpkin. All brinjal are pumpkin. All brinjals are pumpkin. And given no pumpkin is potato. This is pumpkin. Okay, potato. This one is potato. So one, we have kept them as far as possible. Okay, अब conclusion देखो यार, conclusion में some and all है. See, can you prove them wrong? First one है some pumpkin is carrot. Some pumpkin are carrots. होगा ये grammatically wrong है. Some pumpkins are carrots. So some pumpkins are carrots. So ये pumpkin यहाँ पे, carrot यहाँ पे. देखो इसी figure से wrong proof हो रहा है. So no need to draw another figure. So first one you can prove wrong. Carrot यहाँ पे, pumpkin यहाँ, no common area, wrong. Second, all potatoes are brinjals. Potato यहाँ, brinjal यहाँ, कोई relation नहीं दूर दूर तक. Second one is also wrong. So again here also
both the conclusions are wrong. Now next one given question, each vowel in the word is changed to the next letter in the English alphabet and each consonant is changed to the previous letter in the English alphabet. Now the letters of the newly formed series are rearranged as per the dictionary. See, I'll just give you the hint, you solve it on your own. Okay, each vowel is changed to the next letter in the English alphabet and each consonant is changed to the previous letter. So vowels यानी कि O, E, A, E, O, E, A, E, they will be changed to the next letter and consonants जो है previous. So P की जगह क्या आ गया, O, at the place of O, P, M consonant है, so previous, L, E है vowel, so next F, G, F, R, Q, A, B, N, M, A, B, T, S, E, F. So vowel is changed to the next one, okay, and the consonants are replaced by the previous letter, okay. Now the letters of the newly formed series are rearranged as per the dictionary. अब डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करो. सो अब डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जैसे बी है, सो बी विल कम फर्स्ट, सो बी आ गया, बी आ गया, बी बी विल कम फर्स्ट, देन एफ एफ, 3F है, फिर L है, M है, O P Q S, okay. So this way you will arrange it. Now the moment you arrange it in this way, what will be the fourth letter from the right hand? So 1 2 3 4, ये fourth letter हो गया right hand से.